Question: write an essay on the Orientalist position vis-a-vis Indian education prior to the introduction of English in India. Answer: Introduction. Historical context. The Orientalist position in Indian education refers to the educational philosophy and policies adopted by British administrators and scholars during the early phases of colonial rule in India. The period before the widespread introduction of English education was marked by the dominance of traditional Indian learning systems. The Orientalist position, 2. Preservation of indigenous knowledge. Orientalists were proponents of preserving and studying traditional Indian languages, literature, philosophy, and sciences. The emphasis was on understanding and documenting the rich cultural heritage of India, including Sanskrit texts and ancient scriptures. Promotion of classical languages. Orientalists advocated the study of classical languages such as Sanskrit, Persian, and Arabic. These languages were considered repositories of ancient knowledge and were essential for a deeper understanding of Indian civilization. Curriculum design. The curriculum designed by Orientalists focused on classical texts, religious scriptures, and indigenous knowledge systems. Subjects like philosophy, literature, astronomy, and medicine were given prominence. Cultural sensitivity. Orientalists aimed to understand and appreciate Indian culture, history, and traditions. They believed that a respectful approach to indigenous knowledge would foster better governance and administration. Advantages of the Orientalist position. 6. Cultural preservation. The Orientalist approach contributed to the preservation of India's cultural and intellectual heritage. Ancient manuscripts and texts were studied and documented, preventing the loss of valuable knowledge. Local relevance. The education system aligned with the local needs and cultural context of the Indian population. It provided education that was more relevant to the daily lives and aspirations of the people. Linguistic diversity. The focus on classical languages acknowledged the linguistic diversity of India. It allowed for the exploration of different linguistic traditions and facilitated communication in diverse regions. Critiques of the Orientalist position. 9. Conservatism and rigidity. Critics argue that the Orientalist approach was conservative and rigid, limiting the scope for intellectual exploration and innovation. The emphasis on ancient texts could hinder the adaptation of knowledge to contemporary challenges. Social hierarchy and exclusion. The education system based on classical languages and traditional texts often favored the elite and Brahminical sections of society. This led to social exclusion and limited access to education for marginalized communities. Economic relevance. Critics contend that the Orientalist education system did not adequately address the practical needs of a changing society. There was a perceived lack of focus on skills that were essential for economic development.
Transition to English education. 12. Macaulay's Minute 1835. The introduction of English education gained momentum with Lord Macaulay's Minute on Education. Macaulay advocated for the primacy of English, considering it as a tool for creating a class of Indians with a westernized outlook. Utilitarian approach. The utilitarian perspective emphasized the practical benefits of English education for administration, trade, and communication. English was seen as a medium for modernizing Indian society and aligning it with British values. Impact on Indian education. 14. Shift in curricular focus. The introduction of English education led to a shift in the curriculum towards Western science, literature, and philosophy. Traditional subjects were gradually sidelined in favor of subjects deemed more relevant to British colonial objectives. Social transformation. English education played a crucial role in social transformation, breaking down traditional barriers and promoting a more inclusive educational system. It allowed individuals from diverse backgrounds to access knowledge and opportunities. Emergence of a new elite. English education created a new elite class of Indians who were familiar with Western thought and values. This class played a significant role in India's struggle for independence and later in shaping the country's political and intellectual landscape. Conclusion. Satra. Legacy of Orientalism. The Orientalist position, despite its limitations, left a lasting impact on Indian education. It contributed to the preservation of cultural heritage and the development of indigenous knowledge systems. Transition to English education. The transition to English education marked a turning point in India's educational history, bringing about both challenges and opportunities. The subsequent evolution of the education system reflected the complex interplay between indigenous traditions and Western influences. In conclusion, the Orientalist position in Indian education before the widespread introduction of English reflected a commitment to preserving indigenous knowledge and cultural heritage. While it had its advantages in terms of cultural preservation and local relevance, criticisms centered around conservatism and social exclusion. The subsequent shift to English education brought about significant changes, influencing the trajectory of Indian education and shaping the emergence of a new intellectual and political class. The legacy of this historical transition continues to influence discussions on education and cultural identity in contemporary India. प्रश्न. प्राच्यवादी स्थिति पर एक निबंध लिखें। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत से पहले भारतीय शिक्षा की तुलना। उत्तर. परिचय। ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय शिक्षा में प्राच्यवादी स्थिति भारत में औपनिवेशिक शासन के शुरुआती चरणों के दौरान ब्रिटिश प्रशासकों और विद्वानों द्वारा अपनाए गए शैक्षिकी दर्शन और नीतियों को संदर्भित करती है। अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक परिचय से पहले की अवधि पारंपरिक भारतीय शिक्षण प्रणालियों के प्रभुत्व से चिन्हित थी। प्राच्यवादी स्थिति। 2
स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण। प्राच्यवादी पारंपरिक भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के संरक्षण और अध्ययन के समर्थक थे। संस्कृत ग्रंथों और प्राचीन ग्रंथों सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने और दस्तावेजीकरण करने पर जोर दिया गया। शास्त्रीय भाषाओं का प्रचार। प्राच्यवादियों ने संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की वकालत की। इन भाषाओं को प्राचीन ज्ञान का भंडार माना जाता था और ये भारतीय सभ्यता की गहरी समझ के लिए आवश्यक थी। पाठ्यक्रम प्रारूप। प्राच्यविदों द्वारा डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम शास्त्रीय ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर केंद्रित था। दर्शन, साहित्य, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। प्राच्यवादियों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को समझना और उनकी सराहना करना था। उनका मानना था कि स्वदेशी ज्ञान के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण बेहतर शासन और प्रशासन को बढ़ावा देगा। प्राच्यवादी पद के लाभ। 6. सांस्कृतिक संरक्षण। प्राच्यवादी दृष्टिकोण ने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के संरक्षण में योगदान दिया। प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया गया, जिससे मूल्यवान ज्ञान की हानि को रोका जा सके। स्थानीय प्रासंगिकता। शिक्षा प्रणाली भारतीय आबादी की स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप थी। इसने ऐसी शिक्षा प्रदान की जो लोगों के दैनिक जीवन और आकांक्षाओं के लिए अधिक प्रासंगिक थी। भाषिक विभिन्नता। शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार किया गया। इसने विभिन्न भाषाई परंपराओं की खोज की अनुमति दी और विभिन्न क्षेत्रों में संचार की सुविधा प्रदान की। प्राच्यवादी स्थिति की आलोचनाएं। 9. रूढ़िवादिता और कठोरता। आलोचकों का तर्क है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण रूढ़िवादी और कठोर था, जिससे बौद्धिक अन्वेषण और नवाचार की गुंजाइश सीमित हो गई। प्राचीन ग्रंथों पर जोर समकालीन चुनौतियों के लिए ज्ञान के अनुकूलन में बाधा बन सकता है। सामाजिक पदानुक्रम और बहिष्करण। शास्त्रीय भाषाओं और पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित शिक्षा प्रणाली अक्सर समाज के कुलीन और ब्राह्मणवादी वर्गों का पक्ष लेती थी। इससे सामाजिक बहिष्कार हुआ और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंच सीमित हो गई। आर्थिक प्रासंगिकता। आलोचकों का तर्क है कि प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली बदलते समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान देने की कथित कमी थी। अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तन। 12. मैकॉले का मिनट 1835। लॉर्ड मैकॉले के शिक्षा पर मिनट के साथ अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को गति मिली। मैकॉले ने अंग्रेजी की प्रधानता की वकालत की, इसे पश्चिमीकृत दृष्टिकोण वाले भारतीयों का एक वर्ग बनाने का एक उपकरण माना। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य ने प्रशासन, व्यापार और संचार के लिए अंग्रेजी शिक्षा के व्यावहारिक लाभों पर जोर दिया। अंग्रेजी को भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और ब्रिटिश मूल्यों के साथ जोड़ने के माध्यम के रूप में देखा गया।
भारतीय शिक्षा पर प्रभाव 14। पाठ्यचर्या फोकस में बदलाव। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के कारण पाठ्यक्रम में पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और दर्शन की ओर बदलाव आया। ब्रिटिश औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए अधिक प्रासंगिक समझे जाने वाले विषयों के पक्ष में पारंपरिक विषयों को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेजी शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तन, पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने और अधिक समावेशी शैक्षिकी प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को ज्ञान और अवसरों तक पहुंचने की अनुमति दी। एक नए अभिजात वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों का एक नया अभिजात वर्ग तैयार किया जो पश्चिमी विचारों और मूल्यों से परिचित था। इस वर्ग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के राजनीतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष 17। प्राच्यवाद की विरासत। प्राच्यवादी दृष्टिकोण ने अपनी सीमाओं के बावजूद भारतीय शिक्षा पर अमिट प्रभाव छोड़ा। इसने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के विकास में योगदान दिया। अंग्रेजी शिक्षा की ओर संक्रमण। अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तन ने भारत के शैक्षिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे चुनौतियां और अवसर दोनों सामने आए। शिक्षा प्रणाली के बाद के विकास ने स्वदेशी परंपराओं और पश्चिमी प्रभावों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को प्रतिबिंबित किया। निष्कर्षतः अंग्रेजी के व्यापक परिचय से पहले भारतीय शिक्षा में ओरिएंटलिस्ट की स्थिति स्वदेशी ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय प्रासंगिकता के मामले में इसके फायदे थे, आलोचनाएं रूढ़िवाद और सामाजिक बहिष्कार पर केंद्रित थीं। बाद में अंग्रेजी शिक्षा में बदलाव से महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे भारतीय शिक्षा की गति प्रभावित हुई और एक नए बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग का उदय हुआ। इस ऐतिहासिक परिवर्तन की विरासत समकालीन भारत में शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान पर चर्चा को प्रभावित करती रही है।